Krishna Balava Girivaralari Nandana Vraja Jana Rajana Yamuna Tira Nachari Krishna Vallabha Girivadadari Yasodanandana Vraja Jana Rajana Yamuna Tira Nachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Chaitanya Manovistan Stapitam Navutale Swayam Rupakadamayam Dadatyava Padamtikam Vandeham Sri Guru Syuttapada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Cha Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vatsadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Harinam and Kirtan is one service like any other one. Someone can translate. Sankirtan, Harinam, Bhajan is cooking for the deities. All this service we must to perform as possible in Sattva Guna. हरिनाम भगवान के लिए खाना बनाना संकीर्तन सब जितने भी भक्ति के अंग हैं ये सब हम लोग को सत्व गुण में करने चाहिए जहाँ तक हो सके हमें सत्व गुण में करने चाहिए To satisfy the Lord, all our activity must to be in Sattva Guna. अगर भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं भक्ति की तो सब सत्व गुण में होनी चाहिए. Yeah. For that, when we make bhajan, the mrindanga never go up the leader of the bhajan, of the kirtan. तो इस संदर्भ में जब हम कीर्तन भजन करते हैं तो जो मृदंग बजता है वो कभी भी लीडर से आउट नहीं जाना चाहिए. It's not joking. It's not like that joking.
It's not like that. मजाक नहीं है, हमें इस तरह से We try to satisfy Krishna. हम लोग को भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना है। And for that, all activities must to be in Sattva Guna, not in Rajo Guna. इसीलिए हमारी सभी गतिविधियां जो हैं वो सत्व गुण में होनी चाहिए, रजोगुण में नहीं होनी चाहिए। Devotional service is the only way to go back to Godhead. क्योंकि यही एकमात्र तरीका है कि हम भगवान के धाम। So even the more simple activity, even of the more simple devotional activity, must to be with good consciousness in Sattva Guna. भक्ति की बहुत सरल से सरल जो गतिविधि है वो भी सत्व गुण में होनी चाहिए। If we perform the activities in Raja Guna, we cannot satisfy Krishna. अगर हम रजोगुण में भक्ति की गतिविधियों को करेंगे Also तो no, भगवान को satisfy नहीं कर also no in Tamas Guna. सकते। या फिर तमस गुण में करेंगे। Yeah. And on the same time, we give bad example. On the same time, if we do in Raj and Tamas, we give for the other bad example. अगर इसी तरह से हम रजोगुण और तमोगुण में करेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी गलत उदाहरण पेश करेंगे। Preaching must to be in Sattva Guna. प्रचार जो है वो हमेशा सत्व गुण में होना चाहिए। And preaching with the example is the more important activities. और प्रचार जो है हमारे आचरण से अगर हम करें तो ये ज्यादा अच्छी चीज है। If you give a bad example, all the other follow also. अगर हम गलत उदाहरण स्थापित करेंगे तो बाकी सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। Yeah, everyone will take the Marindanga and will start to सभी लोग enjoy. जोर जोर से बजाना शुरू कर देंगे। So it's not easy to be in Krishna consciousness. कृष्ण भावना में बने रहना इतना आसान नहीं है। We must to take serious and take care in our activities. हम लोग को हमारी गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए। So we will read one slok of Bhagavad Gita now. आज हम लोग भगवद गीता का एक श्लोक का पाठ करेंगे। When one person, when one jiva atma gets, by the mercy of the Lord, get one human form, जब एक जीव आत्मा को भगवान की कृपा से मनुष्य योनि प्राप्त होती है, have three responsibility, तो उसकी तीन जिम्मेदारियां होती हैं। three duty. तीन जिम्मेदारियां हैं। The first duty is spiritual. पहली जिम्मेदारी आध्यात्मिक है। The second duty is family. दूसरी जिम्मेदारी जो है वो परिवार है। And the third is social. और तीसरी जो है वो सामाजिक है। Your future depends of how you perform these three activities. आपका भविष्य इस चीज के ऊपर निर्भर है कि आप इन तीन गतिविधियों को कैसे करते हैं। Sri Jagadant Valeva Subhadra ki jai, Pancha Tattva ki jai, Sri La Prabhupada ki jai. So the future depends of how you perform these three duties. तो हमारा भविष्य इस चीज पे निर्भर है कि हम इन तीन गतिविधियों को कैसे परफॉर्म करते हैं। But in the planet, all in the planet, there is millions people who have one human form, but they don't know anything about these three duties. इस सृष्टि में असंख्य लाखों करोड़ों जीव हैं जिनके पास मनुष्य शरीर तो है, मगर उनको इन तीन गतिविधियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। Yeah, so they live just for enjoying. इसीलिए Sense gratification. इसीलिए जब हमें इन तीन गतिविधियों जिम्मेदारियों के बारे में नहीं पता है तो हम लोग आनंद यानी सेंस मटेरियल भौतिक सुख को प्राप्त कर रहे हैं। What is the problem? इसमें दिक्कत ही क्या है? What is the problem? इसमें क्या दिक्कत? Question. You laughing. What is the problem? आप बताइए क्या दिक्कत है? आप हंस रहे हैं। What is the problem? Sense gratification. What is the problem? अगर हम इंद्रिय भोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है?
He's saying will be equal to animals. He's saying we'll become equal to animals. Born again. This is the problem. Born again. वापस से जन्म लेना पड़ेगा. ये समस्या है. It's not specifically animal because there is 8,400,000 form of life. जरूरी नहीं है हम जानवर ही बने क्योंकि 8,84,000 दुनिया है उसमें सब कुछ नहीं बन सकते हैं. So this is the solution. The best charity to do is to give knowledge. सबसे बड़ा जो दान है करने के लिए वो है ज्ञान का दान देना. लोगों को ज्ञान देना. Because by giving knowledge, the living entity can go in the root of the problem. जो ज्ञान है अगर हम सही ज्ञान लोगों को देंगे तो जो जीव आत्मा है वो उसकी समस्या की जड़ तक जा सकती है. And the problem is the karma you generate. जो समस्या है वो कर्मा है. More you perform activity for sense gratification, personal sense gratification, more you charge your karma. जितना ही हम अपनी इंद्रिय भोग के लिए क्रियाएं करते हैं, जितना हम अपनी इंद्रिय भोगों के माध्यम से अपने आप को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम और अपने ऊपर कर्मा इकट्ठा करते हैं. Sense gratification, these are deceptive and sinful activities. इंद्रिय भोग जो है वो एक पाप की एक्टिविटी है. Deceptive because you cheating yourself. ये डिसेप्टिव इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं. You become more and more contaminated. आप और ज्यादा अशुद्ध होते जाते हैं. And the mind never will be satisfied. और आपका मन उसको चाहे जितना भी कर ले कभी भी Even if you become millionaire, even if you get millions, अगर आपके अनेकों आपको करोड़ों रुपए भी मिल जाए तो भी आपका मन जो है संतुष्ट नहीं होगा. the mind never can be satisfied in material level. जो मन है वो कभी भी इस भौतिक जलशय में कभी भी शांत नहीं हो पाएगा. Only when the mind become completely spiritualized, there the mind will be satisfied. मन खाली तभी संतुष्ट हो सकता है जब वो पूर्णतः आध्यात्मिक हो जाए. The mind is responsible of all body activities. मन जो है वो पूरे शरीर की जितनी भी हम गतिविधियां करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है. And superior of the mind is the intelligence. और मन से ऊपर जो है वो है इंटेलिजेंस, बुद्धि. Yeah. And who direct the intelligence? और बुद्धि को कौन डायरेक्ट करता है? Who direct the intelligence is the consciousness. बुद्धि को जो डायरेक्शन देता है वो है हमारी चेतना. Yeah. The consciousness is individual. जो चेतना है वो इंडिविजुअल है. What mean that? What mean individual? Question. What mean individual? Individual consciousness. व्यक्तिगत चेतना का क्या मतलब है? Individual consciousness means the consciousness can be material or spiritual. If the consciousness is material, will guide the intelligence to make material business. चेतना जो है वो या तो आध्यात्मिक हो सकती है या भौतिक हो सकती है. अगर हमारी चेतना जो है वो भौतिक है तो वो हमें गाइड करेगी, वो हमें मार्गदर्शन करेगी कि हम इस भौतिक चीजों को भोगे. If the consciousness is spiritual, the consciousness will guide the intelligence to do spiritual progress. अगर ये चेतना हमारी आध्यात्मिक है तो ये हमारी बुद्धि को मार्गदर्शन देगी कि हम आध्यात्मिक चीजें करें. So the intelligence is the really identity of the living being. जो बुद्धि है वो वास्तविक में आइडेंटिटी है, सत्य आइडेंटिटी है एक जीवात्मा की. Consciousness. चेतना. Yeah. For that, Srila Prabhupada founded International Society for Krishna Consciousness. इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रतिष्ठान. Because the consciousness is the real identity of everyone. क्योंकि चेतना जो है वही वास्तविक स्वरूप है सभी जीवों का. When the mind becomes completely pure,
जब हमारा मन पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाता है, the consciousness direct all the pure consciousness direct all your activities. तो ये जो शुद्ध चेतना है, ये हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों को का मार्गदर्शन करती है। And this is the perfection. और ये साक्षात्कार है। What mean perfection? साक्षात्कार का क्या मतलब है? What mean perfection? Someone can tell me? What mean perfection? आप में से कोई बता सकता है कि परफेक्शन का क्या मतलब है? Shuddhetasa, pure consciousness. This is the शुद्ध perfection. चेतना का क्या अर्थ है? कोई बता सकता है आप में से? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, chapter 7, knowledge of the Absolute. भगवद गीता अध्याय 7, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। Text 27. 27वां श्लोक। Icharvesha samutena dadva morena varata sarva bhutani samoham sarjayanti param tappa. Translation and purport by His Divine Grace, H.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. O son of Bharat, O conqueror of the fall, all living entities are born into delusion, bewildered by duality arise from desire and hate. हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। Yeah, the mind follow two processes. उनका मन दो गतिविधियों का पालन करता है, Sankalpa and Vikalpa. संकल्प और विकल्प। I accept, I reject. मैंने कहा, मैंने इनकार कर दिया। Yeah, even the children, even in the age children, the mind perform these two activities. Sankalpa and Vikalpa. बच्चों का भी जो मन होता है, ये दो प्रकार की गतिविधियां करता है, संकल्प और विकल्प, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना। From very young age, 1 year old, then accept or reject. बहुत ही छोटी उम्र से, 1 साल की ही उम्र से वो लोग इस प्रकार का बिहेव करते हैं, या तो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। Yeah, this is the process of the mind. ये मन का प्रोसेस है। Yeah, this is two process. The ये mind. दो तरह के गतिविधियां हैं। So from the age of children, the mind start to accept and reject. बचपन से ही हमारा मन जो है वो या तो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। And when the person has 100 years, the mind do the same. और जब वो Sankalpa, Vikalpa. जब वो 100 साल के भी हो जाते हैं, तब भी उनका मन यही काम करता है, संकल्प और विकल्प। So what is the solution? तो इसका समाधान क्या है? The solution is to purify the mind. तो समाधान ये है कि हम अपने मन को शुद्ध कर लें। Because we are in the wall of the duality. क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग ये द्वंद्वों के जगत में हैं। Everything come by duality. सभी चीज जो है वो द्वंद्वों से आ रही है। Very rich, very poor. बहुत अमीर, बहुत गरीब। Very clever, very not clever. बहुत बुद्धिमान, बहुत बेवकूफ। Yeah. Very happy, very unhappy. बहुत ही खुश, बहुत दुखी। Very good situation, very bad बहुत situation. अच्छी परिस्थिति, बहुत ही बुरी परिस्थिति। And this during our permanence in the material world will be always like that. The duality, good and bad, good and bad. और ये परिस्थिति इस भौतिक जगत में परमानेंट है, हमेशा ये हमें ऐसे ही मिलेगी, द्वंद्वों के बीच में युद्ध, ये अच्छा है, ये बुरा है। And the spiritual world is not like that. मगर आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है। There the atmosphere is pure, pure atmosphere.
वहां पर सभी कुछ जो है वो शुद्ध है। Everything is Satchit Ananda. सभी चीजें जो है वो सच्चित आनंद है। So in the purport, Srila Prabhupada say, Srila Prabhupada writing that the real constitutional position of the living entity is that of subordination to the Supreme Lord, who is pure knowledge. तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। Yeah, this is the real position. ये वास्तविक ज्ञान है। When one is deluded into separation from this pure knowledge, he becomes controlled by the illusory energy and cannot understand the Supreme Personality of Godhead. मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। The illusory energy manifested in the duality of desire and hate. यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। Due to desire and hate, the ignorant person wants to become one with the Supreme Lord and read Krishna as the Supreme Personality of Godhead. इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। Pure devotees who are not deluded or contaminated by desire and hate can understand that Lord Sri Krishna appeared by his internal potency, but those who are deluded by duality and nescience think the Supreme Personality of Godhead is created by material energy. किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे ये सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। Yeah. So the material consciousness contaminates more and more the person. तो ये जो भौतिक चेतना है, ये हमें और ज्यादा दूषित करती जाती है। Because the aim is material. क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वो भौतिक है। Everything what he do is material. यहाँ पर जो कुछ भी हम करेंगे वो सब भौतिक है। And by this activity we can more and more contaminate. और ये सब गतिविधियों के कारण हम और ज्यादा अशुद्ध होते जाते हैं। And the problem in this Kali Yuga is 99% or more are bewildered by this. और कलयुग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 99% या उससे भी ज्यादा लोग इस चीजों से मोहग्रस्त हैं। And nobody want to know anything. Maybe one person in few hundred, but people don't want to get spiritual information. और लोगों को वास्तविक ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके जानने की कोई रुचि नहीं है। Because they बहुत बिरले कोई हैं, कई हजारों में कोई एक होगी जो जानना चाहते हैं। because there is no faith. क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है। So how to develop तो श्रद्धा को faith? तो श्रद्धा को कैसे डेवलप किया जाए? Faith will be developed in sadhu sangha, satsanga. जो श्रद्धा है वो इस प्रकार के सत्संग से उत्पन्न होती है। For that we, especially in India, we get more and more temple, more and more center. What we do now, that is so many hundred places in India than do devotees do. जिस प्रकार से हम भारत में कर रहे हैं, नए मंदिर हम खोलते जा रहे हैं, नए केंद्रों का हम उद्घाटन करते जा रहे हैं, नई जगह हम खोल रहे हैं, ये डिवोटीज की श्रद्धा को बढ़ाएगा। Yeah. So material consciousness contaminate the person.
जो भौतिक चेतना है वो अशुद्ध कर देती है जीव को। Envy also contaminate the person. ईर्ष्या भी जो है वो भी जीव को अशुद्ध कर देती है। One see how live the other and sometimes get envy. जब हम देखते हैं कि वो सामने वाला मुझे कैसे आदेश दे देता है तो उससे हम कभी-कभी ईर्ष्या कर लेते हैं। Yeah, envy is there in the concept. हमारे अंदर ईर्ष्या भरी हुई है। Yeah. And other covering of contamination is the attachment. और बाहरी आवरण जो है, बाहरी कवरिंग जो है इस ईर्ष्या की या भौतिक सुखों की, ये है हमारा material attachment. भौतिक अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति। The perfection attachment is the tendency of the soul. आसक्ति जो है वो सोल की टेंडेंसी है। We cannot delete that. हम उसको मिटा नहीं सकते। If the Jivatma is in the body of one man, or in the body of one dog, or in the body of one bear, there is always envy. जीव चाहे एक कुत्ते के शरीर में हो या किसी और भी शरीर में हो, उसके अंदर ये जो अटैचमेंट है ये रहेगा, इसको हम नहीं मिटा सकते। By envy there is also fighting. ये जो ईर्ष्या है इसी की वजह से ये युद्ध भी होते हैं। Envy is like fire in the heart, fire. ईर्ष्या जो है वो अग्नि के समान है हृदय में। To reduce this envy is the direct way is bhakti yoga. अगर इस ईर्ष्या की अग्नि को हमें कम करना है तो इसका एकमात्र उपाय भक्ति योग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। False ego is also a covering of contamination. जो false ego है वो भी एक बाहरी आवरण है। Identification with mind, identification with the material energy. ये जो मिथ्या अहंकार है ये हमारे को हमारा आइडेंटिफिकेशन बताता है भौतिक चीजों के साथ। False ego. The false ego have the tendency to generate atheism. ये मिथ्या अहंकार जो है इसकी टेंडेंसी है ये जनरेट करने की। Why is millions people in the world who don't want to know anything about spiritual practice? Why? ऐसा क्यों है कि असंख्य लोग इस जगत में हैं जिनको कुछ भी आध्यात्मिक चीजों के बारे में जानने की इच्छा नहीं है? Because this hankara is in the heart. क्योंकि ये अहंकार उनके हृदय में है। And the tendency of the false ego is to generate atheism. और मिथ्या अहंकार का यही कार्य है कि वो इस प्रकार के अहंकार को आपके हृदय में पनपते रहे। And everything become material. और इस प्रकार से सभी चीजें जो हैं वो भौतिक बन जाती हैं। So it's important to understand the aim must to be completely spiritual. तो इसीलिए हमें समझना चाहिए हमारा उद्देश्य जो है वो पूर्ण तरह से आध्यात्मिक होना चाहिए। No any compromise with demons. इस प्रकार से 1% का भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। In this universe there is in the Mahatattva there is Sura and Asuras. इस जगत में दो चीजें हैं, सुर है और असुर है। There is no another one. It's only Sura or Asura. और कोई तीसरा नहीं, खाली दो ही चीजें हैं, तो सुर है या फिर असुर है। Because we born many people born in Asura families, then don't understand the people are Asuras. इसलिए क्योंकि हम Get बहुत बार get habit to live. क्योंकि हम बहुत बार इस असुर योनि में हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो असुर हैं, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है ऐसा देखते हुए। It's like that. ये इसी तरह से है। Me also, I was born in Asura family. मैं भी असुर के परिवार में जन्म लिया था।
And I saw sometime when then killing the cows and cutting and selling. I saw this. I was with these families. मैं ऐसे परिवार में था जहाँ पर मैंने देखा लोगों को गाय को काटते हुए बेचते हुए. Yeah, and for me it was normal. और मेरे लिए वो सब चीजें बहुत ही नॉर्मल थी. Take one chicken and cut the head and eat it. एक चिकन को लो, उसको काट लो और खा लो. That is activity of, it's not the suras, it's the asuras. ये सुर की गतिविधियां नहीं है, ये असुर की गतिविधियां. You feel no good, so you drink whiskey, sharab. आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप विस्की पी रहे हैं, शराब. It's no sura. This is no activity of sura. ये सुर की गतिविधियां नहीं है, ये असुर की गतिविधि. But when we see that every day, we think it's good family. परंतु जब हम रोज यही चीज होते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि यही सत्य है, यही सही है, ऐसा परिवार है. Krishna is in the heart of everyone. कृष्ण सभी के हृदय में है. He see what you eat, what you think, what you do. ये वो देख रहे हैं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. So it's important to use the human form in the right way. तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस मनुष्य शरीर को सही दिशा में इस्तेमाल करें. Because now we have human form. मगर क्योंकि अब हमारे पास इस मनुष्य शरीर है. Atato Brahma Jigyasa. अततो ब्रह्म जिज्ञासा. Now is the moment to perform devotional activities. अब वो समय है कि हम आध्यात्मिक गतिविधियों को करें. Because we don't know which kind of body we have next life. क्योंकि हमें ये पता नहीं कि इसके बाद वाले जीवन में हमारे पास किस प्रकार का शरीर होगा. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare. And another covering of contamination is ignorance. एक और आवरण जो है हमारे कंटामिनेशन का वो है अज्ञान. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय. Agyana. अज्ञानता. This is also contaminated. For that Prabhupada say the best charity is to give knowledge. इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे अच्छा दान जो है वो ज्ञान का दान है. Yeah. I saw sometime in the yatras where there is some Mahotsava, many sadhus go to participate there. मैं देखता हूँ बहुत बार ऐसे कुछ यात्रा होती है जहाँ पर बहुत सारे साधु जाते हैं भाग लेने के लिए. And some people change, for example, 200 rupee and take 200 coin of 1 rupee. कुछ लोग ऐसे खुले लेते हैं, 15 नोट देते हैं 200 का और 200 के सिक्के लेते हैं. And the sadhu are sitting in line, 200 sadhus. और 200 साधु ऐसे लाइन में बैठे हुए हैं. So the donor he go and give 1 rupee for everyone. तो जो दानवीर दानी आदमी है वो जाता है एक सिक्का एक साधु को देते हुए जाता है. It's very good. ये अच्छी चीज है. But this is no bhakti yoga. मगर ये भक्ति योग नहीं है. In bhakti yoga you give knowledge. भक्ति योग में आप सामने वाले को ज्ञान देते हैं. Because the ignorance covering yourself. क्योंकि ये जो अज्ञानता है ये एक आवरण है आपका. So we continue with the lecture. This is their misfortune. Such deluded person symptomatically dwell in duality of dishonor and honor, misery and happiness, women and men, good and bad, pleasure and pain, etc. Thinking, this is my wife, this is my house, I am the master of this house, I am the husband of this wife. यही उनका दुर्भाग्य है. ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान दुख सुख स्त्री पुरुष अच्छा बुरा आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ.
यही मोह के द्वंद्व हैं। These are the duality of delusion. These are the duality of delusion. यही मोह के द्वंद्व हैं। Those who are so deluded by duality are completely false. जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं। And therefore cannot understand the Supreme Personality of Godhead. और वो भगवान को नहीं समझ सकते। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the material world is a reflection of the spiritual world. Perverted reflection. ये जो भौतिक जगत है ये छाया है आध्यात्मिक जगत की, उल्टी छाया है। Yeah. And in the material, the spiritual atmosphere, everything is Satchitananda. आध्यात्मिक जगत में हर एक चीज जो है वो सच्चिदानंद है। And the material is completely opposite. और भौतिक जगत में उसका एकदम विपरीत है। Sat means eternity. सत्य का मतलब है इटर्नल, शाश्वत। This quality reflected in the material world is not eternity, is temporality. और ये क्वालिटी जब आध्यात्मिक से भौतिक जगत में आई है तो कैसी आई है? जो कि शाश्वत नहीं है, जो कि कुछ समय के लिए। Chit is perfect knowledge. चित्त का मतलब है पूर्ण ज्ञान। But reflected in the material world is ignorance. और वो चीज जब भौतिक जगत में आई है तो वो आई है अज्ञानता के रूप में। Ananda is eternal bliss. Ananda. आनंद जो है वो इटर्नल, शाश्वत आनंद है। Eternal happiness. शाश्वत आनंद है। Reflected in the material world is suffering. जब वो भौतिक जगत में रिफ्लेक्ट होती है, उसकी छाया आती है तो वो कैसे आती है? सफर के रूप में आती है। So we are in the jail of Durga. तो हम सभी लोग दुर्गा के जेल में हैं। The Mahatattva is the jail of Durga. ये जो महातत्व से बना हुआ सृष्टि है, ये जो है ये जेल है दुर्गा का। But because we spend so many years, because we spend so many lives in this jail, we think that is normal. क्योंकि हमने इतने सारे जीवन इस जेल में बिता दिए हैं और इतने सारे योनियां इस जेल में बिता दी हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये सब नॉर्मल है। Yeah. ये साधारण है। By the mercy of Srila Prabhupada and Sri Gauranitai, we start to understand where we are. मगर श्रील प्रभुपाद और श्रील गौरनिताई की कृपा से हम ये समझ सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और ये क्या जगह है। And this slok we read today explain this point. और ये जो श्लोक हमने आज पढ़ा ये यही तत्व को बता रहा है। Ichad veja samutenad vanva mohena varata sarva bhutani samohan sarjayanti parantapa. O Shion of Bharat, O conqueror of foe, all living entity are born into delusion. Bewildered by duality arise from the silent head. हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। We are born in the jail of Durga. हम सभी लोग दुर्गा के जेल में पैदा हुए हैं। She is the director of the jail. वो डायरेक्टर है इस जेल के, निर्देशक है इस जेल के। So materialist people approach Durga and say, please give me some money. तो जो भौतिकवादी लोग हैं वो दुर्गा के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ सुख दो। Yeah. But we are servant of Krishna. मगर हम लोग भगवान कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं। The first thing we understand, he is the enjoyer. पहली चीज जो हम समझते हैं वो ये है कि भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम एंजॉयर है। And we are the servant. और हम सभी लोग दास हैं, दास सेवक हैं। If I have little bit, I say, thank you, Krishna.
अगर मेरे पास कुछ भी थोड़ा बहुत आता तो मैं कहता हूँ शुक्रिया कृष्ण। If I have too much, I say, oh Krishna, I don't deserve that. और अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ आता है तो मेरे को ऐसा लगता है कृष्णा मैं इसका क्या करूँगा। I want just to satisfy you. मेरे को खाली आपकी संतुष्टि करनी है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we speak about 5 covering of contamination. हम लोगों ने अभी 5 आवरण के बारे में चर्चा करी जो कि हमारे को अशुद्ध रखती है। Material consciousness, भौतिक चेतना, envy, ईर्ष्या, material attachment, भौतिक आसक्तियां, ignorance, अज्ञानता and false ego. और फॉल्स ईगो। How to go out, how to overcome these 5 contamination. ये 5 प्रकार के जो अशुद्धियां हैं इनसे कैसे ऊपर उठा जाए। There is many process, काफी सारे विधियां इसके बारे में बताई गई हैं। but Bhakti Yoga is direct process. मगर भक्ति योग जो है वो सीधा गतिविधि है। In every activity of Bhakti Yoga, Krishna is in the center. भक्ति योग की समस्त गतिविधियों में कृष्ण जो है वो मध्य में है। Shravanam, श्रवणम, hear about God. कृष्ण के बारे में सुनना, There is God. भगवान का है। Yeah. Kirtanam Vishnu, glorify the Lord. कीर्तनम विष्णु, भगवान का गुणगान करना, There is Vishnu. ये यहाँ पर। Yeah. Smaranam, remember the Lord. Remember the Lord. There is Krishna. स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, भगवान को याद करना। Pada Sevanam, serve the Lakshmi Devi. पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना, जिस प्रकार से लक्ष्मी देवी कर रही है। Serve, Pada Sevanam, serve the lotus feet of the Lord. भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा करना। There is Krishna. वहाँ पर कृष्ण है। Also, when we worship every morning, worship the Tulsi Maharani, that is also Pada Sevana. जब हम देखते हैं कि रोज सुबह हम लोग मंगला आरती के बाद तुलसी आरती करते हैं, वो भी पाद सेवनम है। When we do that, Krishna is satisfied. जब हम वो करते हैं तो भगवान कृष्ण उससे संतुष्ट होते हैं। Archana, worship the Lord. अर्चनम, भगवान का अर्चना करना, भगवान की सेवा करना, Worship the Lord. पूजा करना। There is the Lord, there is Krishna, there is Jagannath Baladeva Subhadra. उसमें भी भगवान है, कृष्ण है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। Bandhana, offering prayers. वंदना, भगवान को प्रेयर का ऑफरिंग देना। Yeah, there is Krishna in the center. उसमें भी भगवान कृष्ण जो है वो मध्य में है। Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam, Archana, Vandana, Dasyam, serve the Lord. दास्य, भगवान की सेवा करना, Serve Krishna. उसमें भी कृष्ण मध्य में है। Atmanivedan, give everything for Krishna. आत्मनिवेदन, Sravanam, भगवान को Kirtanam, संतुष्टि Vishnu, देना। Smaranam, Pada Sevanam, Archana, Vandana, Dasyam, Sakyam, become friend with Krishna. साख्यम, भगवान के साथ मित्रता करने को। So in the nine activities of the Bhakti Yoga, Krishna is there. तो ये जो 9 गतिविधियां हैं भक्ति योगा की, इन सभी में कृष्ण जो है वो मध्य में है। All this activity is offering to Krishna. ये सभी गतिविधियां जो हैं ये हमारा भगवान को प्रेम है, ऑफरिंग है। But in the Vedic process, for example, in the Vedic process, the offering to Krishna there is not. मगर वैदिक प्रोसेस में कृष्ण को ऑफरिंग जो थी वो नहीं थी। Worship demigod. This is one activity in the Vedic process. Worship demigod. देवी देवताओं की पूजा करना ये एक गतिविधि है जो कि वैदिक प्रोसेस में थी। It's okay because it's authorized by the Vedas. ये It's सही okay. है क्योंकि ये चीजें वेदों में लिखी गई हैं। You can do, but it's not for. It's for the less intelligent people. ये तुम ये कर सकते हो मगर ये जो है कम बुद्धि के लोगों के लिए है। Worship the Lord, okay. भगवान की सेवा करो वो सही But है। what about Krishna? But What you give for Krishna?
कृष्ण की क्या? Practice of yoga, pranayamas, is okay because this is one activity in the Vedic process. Practice yoga, practice Ashtanga yoga. योग की प्रैक्टिस करना, अष्टांग योग की प्रैक्टिस करना, ये गतिविधि है जो कि लिखी हुई है, जो कि दी गई है. Yeah, but what about Krishna? मगर कृष्ण का क्या? Studying the Vedas, this is also authorized. Studying Vedas, studying the Vedas. वेदों को पढ़ना, ये भी लिखा हुआ है. Yeah, but Krishna says, Vedai cha sarvairaham eva vedanta krid vedavide vacha. The aim of the studying Vedas is to understand me. मगर कृष्ण कह रहे हैं वेदे से सर्वे हमें वेदे, कि वेदों के माध्यम से अगर कोई जाने लायक वस्तु है तो वो मैं हूँ. जो एक जो गोल है वेदों का वो मैं हूँ. Yeah. So there is many activities in the Vedic process, but the offering to Krishna there is not. तो वैदिक प्रोसेस में बहुत सारी गतिविधियां हैं, मगर वो सभी गतिविधियों में से भगवान कृष्ण को ऑफरिंग देने वाली ये नहीं है. भगवान कृष्ण को ऑफरिंग के बारे में नहीं बताया. For that, Vyasadeva, he spent many years writing the Vedas. इसीलिए हमने बहुत सारे समय बिताए वेदों को लिखने में. And one day his guru appeared, and Narada Muni, and he saw Vyasadeva was unhappy. तो व्यासदेव ने बहुत सारे समय बिताए वेदों को लिखने के लिए, और एक दिन उनके गुरु जो हैं वो प्रकट हुए, नारद मुनि, और उन्होंने देखा कि वेदव्यास जो है वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है. And Narada Muni laughing. और नारद मुनि हंस रहे हैं. They say, you spend many years to write in Veda, you are unhappy. कह रहे हैं आपने इतना सारा वर्ष वेदों को लिखने में व्यतीत कर दिया, Stop. और अभी आप खुश नहीं हैं. Yeah. And Narada Muni said, you are unhappy because you spend many years to write in Veda, but you forget God. तो नारद मुनि कह रहे हैं आप खुश इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बहुत सारे समय लगाया वेदों को लिखने में, मगर आप भगवान को भूल गए. You writing about Dharma, Artha, Kama, Moksha. आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसके बारे में लिखा. So from this moment, Vyasadeva started writing about Nama, Rupa, Guna, Lila. तो अब उस समय के बाद से व्यासदेव ने लिखना शुरू किया नाम, रूप, गुण और लीला के बारे में. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There is some question. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है. Speak Hindi. हिंदी में बोलिए. Then don't understand Hindi. What should we do in order to become or situate ourselves in Sattva-guna? What we do In order to situate ourselves or situate be in Sattva-guna. in Sattva Guna, try to satisfy Krishna. भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करिए. Yeah. Try to satisfy Krishna, perform devotional activities. भक्ति की जो गतिविधियां हैं उनको करिए. Without superior help, nobody can act in Sattva Guna. जब तक वरिष्ठों की मदद नहीं होगी तब तक कोई भी जना जो है सत्वगुण में नहीं आ सकता. It's necessary the mercy of the Lord. ये जो है भगवान की कृपा है. Yeah. By the mercy of the Lord, by the mercy of Gaura Nitai, Srila Prabhupada, our activities become sattva. भगवान की कृपा से, गौर निताई की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमारी जो गतिविधियां हैं, जो डिवोशनल गतिविधियां हैं, वो सत्वगुण में हो सकती हैं. So when Krishna see you want to do spiritual progress, he give you opportunity to be free of sattva and rajo, जब कृष्ण and देखते rajo and tamas.
जब कृष्ण देखते हैं कि आप डिवोशनल गतिविधियां करना चाहते हैं तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं और आपको फ्री कर देते हैं रजो और तमोगुण से। Yeah. But even in devotional service, not everybody is in pure consciousness. There is also mixed consciousness. मगर आध्यात्मिक भक्ति में भी सभी लोग शुद्ध स्तर पे नहीं रहते हैं, कुछ मिश्रित स्तरों पे रहते हैं। Yeah. So sometimes even in devotional service, somebody perform some activity in Raja and Tamas. भक्ति में भी कभी-कभी कुछ भक्त लोग होते हैं जो कि वो कुछ गतिविधियों को रजो और तमस में करते हैं। One time I distributed a book in Europe एक बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे यूरोप में with another brahmachari. हम लोग ब्रह्मचारी थे And the another brahmachari got 10 or 15 years in distributed book. एक और ब्रह्मचारी थे जिन्होंने 10 से 15 साल दे दिए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। He was no new devotee. वो नए भक्त नहीं थे। So I take one side of the road, the street, and he take another side. मैं सड़क का एक साइड पे मैं चलता था और एक साइड पे वो चलते थे। And we do door to door to distribute the book. और हम लोग दरवाजे से दरवाजे जा करके भगवान की प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करते थे। And sometimes someone come and say to me, "Hey, your friend get problem there." कभी-कभी मेरे को कोई आकर के कहता था कि देखिए आपका जो मित्र है उसको कुछ संकट आ गया, कुछ असुविधा हो गई। So I went to see. तो मैंने जा करके देखा। And there was much people. It was some confusion. और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे उसको घिरे हुए। And there was also the another devotee who performed Sankirtan with me, distribution book. तो वहाँ पर वो भी The brahmachari. वहाँ पर वो भी ब्रह्मचारी था जो मेरे साथ संकीर्तन परफॉर्म करता था। And he was very agitated. और वो बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड थे। And I asked, "What is the problem?" मैंने पूछा क्या समस्या है? And there he go to give book in one some atelier, and the man say, "Please go out." तो उन्होंने किसी को जा करके बुक देने का प्रयास किया और जिसको देने के लिए गए उन्होंने कहा कि कृपया करके बाहर जाइए। Yeah. So he start to make discussion. तो उन्होंने उनके साथ वार्तालाप करना शुरू कर दिया। And one moment the man come and push him, "Go out." और उसी समय वो जो आदमी था वो अंदर से आया और उन्होंने उनको धक्का दे करके बोला बाहर जाओ। And the brahmachari put one punch in the face. और वो ब्रह्मचारी ने उसके मुंह पे एक मुक्का मार दिया। That is no sattva-guna. तो ये सत्वगुण नहीं है। So that means not everybody perform activities in sattva-guna. इसका मतलब ये है कि सभी लोग Sometimes it's misconsciousness. सभी लोग जो हैं भक्ति की जो गतिविधियां हैं इसको सत्वगुण में नहीं करते। For it- कभी ये बाकी गुणों का भी प्रभाव रहता है। For that, on the beginning, I told when you perform one bhajan, you must to hear the leader. इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जब आप भजन परफॉर्म करते हैं तो आपको लीडर जो गा रहा है उसको सुनना है। Because to satisfy Krishna, the bhajan must to be in sattva-guna. क्योंकि कृष्ण को अगर संतुष्ट करना है तो जो भजन है वो सत्वगुण में होना चाहिए। It's no question of blam, 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 blam. यहाँ पर You must to hear, you must to hear, you must to follow. यहाँ पर भम भम का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आपको पहले सुनना है और फिर उसको पालन करना है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Other question? और किसी का कोई प्रश्न है? मन है जो या तो स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। तो बुद्धि की तरह मन के भी दो रूप होते हैं। बुद्धि की तरह? मन के भी दो रूप होते हैं। अच्छा, मन का दो आप पूछ रहे मन या तो स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। तो जैसे बुद्धि दो तरह की होती है ऐसे मन भी दो तरह का होता है। He's asking that since our mind has this duality of either accepting things or rejecting things. Yes, this process. Similarly, our intelligence also have this duality of accepting things and rejecting things. Pardon, what? He's asking since our mind has this duality of either accepting things or rejecting things. Yes, that is logic. So he's asking similarly, our intelligence also have that duality, nature of that duality of accepting and rejecting things. Intelligence is guided by the consciousness.
हमारी जो बुद्धि है उसको निर्देश जो है वो देती है हमारी चेतना। If the consciousness is mixed, the consciousness will give you sometime, will direct your intelligence in the material way and sometimes in the spiritual way. ये अगर आपकी चेतना किस तरह की है कि वो डुअलिटी से भरी हुई है, द्वंद्वों से भरी हुई है, कभी आपको भौतिक की तरफ लेके जाती है, कभी आध्यात्मिक की तरफ लेके जाती है। Intelligence is guided by the consciousness. इंटेलिजेंस बुद्धि को जो निर्देश दे रहे हैं वो आपकी चेतना दे रहे हैं। When you get spiritual intelligence, that coming from the spiritual platform. जब आपकी बुद्धि पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाएगी तो वो आपको चेतना भी जो है वो आध्यात्मिक तरफ से। That is the mercy of the Paramatma. वो परमात्मा जो अंदर है उनकी कृपा है हमारे ऊपर। What you see is guided by the Paramatma, the Super Soul. जो भी हम देख रहे हैं वो परमात्मा के निर्देशों के हिसाब से गाइड किया। What you hear is direct by the Paramatma. जो हम सुन रहे हैं वो भी परमात्मा के द्वारा ही गाइडेड है। What you thought is direct by the Super Soul. जो हम सोच रहे हैं वो भी परमात्मा यानी What you feeling is direct by the Super Soul. जो हम महसूस कर रहे हैं वो भी उसको भी जो डायरेक्शन है वो परमात्मा। And also your whim is guided by the Super Soul. और आपका विल जो आपकी विल है, Whim. जो आपका द्वंद्व Your है, whims. Your whims are guided also by the Paramatma. जो आपके द्वंद्व है, इच्छाएं हैं, वो भी परमात्मा द्वारा guided है। So that is just information, but when you realize this information, you will surrender because it's no other way. जब आप इन सबको जान जाएंगे तो आप भगवान को सरेंडर करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। Yeah. Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam, Krishna say. But you need the realization to surrender. भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों को सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं, ये कृष्ण कह रहे हैं। And the realization also coming from the Super Soul. तो ये जो साक्षात्कार है ये हमें होना चाहिए और ये साक्षात्कार भी हमें परमात्मा के माध्यम से। Yeah. When we realize at this point, we are ready to go back to Vaikuntha. जब हम ये साक्षात्कार कर लेंगे तो हम वैकुंठ जाने के लिए। For that Krishna say, for that Krishna say the 3:27. How we start this slok? 3:27. I forget how to start. Prakriti kriyamanani unai karmani sarvacha ahankaravi mudadma kartahamiti manyanti. Prakriti kriyamanani. Now, by false ego, we think I do that. In reality, the gunas act, not the soul. कृष्ण बता रहे भगवद गीता के 3:27 में प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्ता हमें दिखने देती है। हम प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनके अधीन में होकर के हमें ऐसा लग रहा है कि हम चीजें कर रहे हैं। ये हमारा अहंकार है जो कि हमें ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि हम सारी गतिविधियां कर रहे हैं, यानी कर्ता मैं हूं, मगर ऐसा नहीं है। कर्ता जो है वो ये 3 गुण हैं। This is no argument for Bhakta program, because not everybody can understand this point. This is argument maybe not for new devotees. ये जो संवाद है ये नए भक्तों के लिए नहीं है। Because no, then some new devotees cannot understand. क्योंकि नए भक्त इस चीज को नहीं समझ सकते। What you see is direct by the Super Soul. क्योंकि हम जो देख रहे हैं
वो भगवान के निर्देश यानी परमात्मा के निर्देश से What you hear is direct by the super soul. जो हम सुन रहे हैं वो भी निर्देश जो है सुपर सोल का है। What you feel is direct by the super soul. जो हम महसूस कर रहे हैं वो भी निर्देश जो है उसका भी परमात्मा दे रही है। And your whim is also direct by the super soul. और हमारी जो विम है वो भी जो है उसका निर्देश जो है वो सुपर सोल दे रही है। So, if you sing by false ego, you sing I do, never will understand. अगर आपको कभी ऐसा लगता है, Never will understand the right way. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, तो कभी भी सही तरीके से ज्ञान को नहीं प्राप्त। Ahankara vimudadma kartaham intimanyate. अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें ये हमारा अहंकार है। But when you understand everything what I see now, everything what I hear now, everything what I feel now is guided by the super soul, I am ready to surrender. मगर जब आप इस चीज को समझ लेते हैं कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ, जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा हूँ, ये परमात्मा के निर्देश के अनुसार ही हो रहा है, तो हम भगवान को शरणागत लेने के लिए तुरंत तत्पर तैयार हो जाते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you for your attention. आप सभी लोग का शुक्रिया। जय गुरु। Srila Prabhupada ki Jai, Jagannath Baladev Subhadra ki Jai, Tai Gaur Premanande. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हम सभी लोग परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी